तलहा अंजुम को सुन रहे हो अभी भी? भाई इफ़ यू टॉक अबाउट तलहा अंजुम ना भाई, मैं ना 10 ऐसे रैपर नाम बोल दूंगा जो उससे इंस्पायर्ड है। In Desi hip hop, there is a wide audience of Desi hip hop right now. Every artist trying to stay relevant. काफी लोग सिर्फ एक ही नाम के बारे में बात करते हैं, तला अंजुम। But what about the man जो अभी भी still काफी underrated है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात वही लाया अंजुम को बीट पर। Millions of fans from India and Pakistan listen Youngsters, and they gave more limelight to Tala Anjum because Tala Anjum got popular on Reels, so he gained a big heartbreak audience. But इन सब में एक आर्टिस्ट जो रैप गेम का की प्लेयर है कहीं गुम होकर रह गया। In this video we're gonna talk about Tala Yunus, जिसने DHH को एक अलग पहचान दी। But no one is talking about him that much. I don't know why. I am a big fan of Anjum, but Tala Yunus also deserves equal limelight. TY known for his brutal flow and unforgiving style of writing. But when we talk about poetry, TY always set the bar so high. आदत जो कि TY का one of the best track है in terms of writing. अगर आपने ये song नहीं सुना, you are missing this masterpiece. It is even better than Downers and Dusk. If you listen this track deeply, but this song didn't get much streams जैसे Downers and Dusk को मिली। TY का ये song अभी भी काफी ज्यादा underrated है। When everyone is dropping their songs on that time, Tala Yunus dealing with the trauma because उनके मॉम की डेथ हो गई थी। क्वींस एडमिरेशन था, फिर उसके बाद जो था वो एक ट्रेजेडी हो गई थी। तला यूनुस की वालदा का इंतकाल हो गया था। इट वाज, ये डेट मुझे याद है, आई थिंक 4 मई 2012। After that, Youngsters got disbanded and he left Karachi in 2013 to study filmmaking. A lot of things happened on that time with Tala Yunus, but he dealt with these traumas single-handedly. In 2017, they reunited for Rebirth album, जिसमें Youngsters ने Dear Zainab, Karachi Lingo and Real Talk जैसे ट्रैक ड्रॉप किए, जो कि अभी भी काफी लोग सुनते हैं। उस टाइम पर एमी और रफ्तार की बीफ भी चल रही थी। Youngsters song Quarantine was the song जिसमें तला यूनुस का वर्स सबसे ज्यादा फेमस है because of his flow and brutal style. This song got 27 million views and it is one of the best feature songs in Guman and Afsane, which is also the most streamed track of YS. In these songs, Tala Yunus shows his versatility by doing poetry, and these songs got one of the best poetic rap of Tala Yunus. But still, abhi bhi Tala Yunus underrated hai because when the time Anjum released his album Open Letter, Anjum was so active on that time. Anjum song like Downers and Dusk, Death Wish and many songs जिसमें काफी सारे वर्स नोटिसेबल हैं और हर सॉन्ग पर रील्स बन रही थी। इस टाइम पर तला यूनुस के काफी सारे सॉन्ग्स जिनमें फ्लो नो डाउट बहुत अच्छा था, बट वर्स इतने नोटिसेबल नहीं थे। इस वजह से व्हेन TY ड्रॉप्स एक्चुअली गुड सॉन्ग, लोग इतना ज्यादा उसे नोटिस नहीं करते थे। When I started listening Tala Yunus, I thought his voice in melodic rap was not that good as compared to Anjum. तला यूनुस की वॉइस हार्डकोर रैप और सोशल इश्यूज में ज्यादा अच्छी लगती थी, बट आफ्टर लिसनिंग टू हिज सॉन्ग्स ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, मैंने एक्चुअली बिगिन टू लाइक इट लाइक अंजुम वॉइस। जितना ज्यादा तला यूनुस अंडररेटेड है, उतना ज्यादा मेरा चैनल भी अंडररेटेड है, सो सब्सक्राइब। तला यूनुस एल्बम शिकवा साइड बी गॉट सम अमेजिंग सॉन्ग लाइक आदत, शिकवा टाइटल ट्रैक एंड चल पड़े आर वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ऑफ दैट एल्बम। आई लाइक चल पड़े एंड आदत acoustic because I like when the artists do experiments with his art, and big round of applause for जोके, जिसकी बात हम एक अलग वीडियो में करेंगे। तला यूनुस के एल्बम के स्ट्रीम्स इतने ज्यादा नहीं because new DHH audience haven't discovered this album, जिसकी वजह से DHH की पुरानी ऑडियंस काफी गुस्सा है। But this is TY वाला G style. I can tell he is doing what he has been doing for the years and keeping it real to the game. Rapbot और रोहन क्रियापा ने अभी तक तला यूनुस के बारे में बात नहीं की। क्यों नहीं की? God knows. Reaction channels and breakdown channel ने काफी वीडियो बनाई on मंजर कशी and him just good with the flows, not with the lyrics. While the truth is every verse in खाना बदोश album or any other features stand out and his lyrics have meanings. If you have not listened मंजर कशी, जो के पार्ट है खाना बदोश एल्बम का, तो जाके एक बार तला यूनुस का वर्स सुनना। It is one of the finest verse of
all time. Tala Yunus की चैनके के साथ भी beef हुई. Chenke diss YS many times because Chenke is religious kind of a person. Chenke also respect TY, but Chenke diss YS for promoting alcohol and drugs in Pakistan. So in reply, Tala Yunus dropped several diss tracks for Chenke, जिनका name है Bhenke and Joker. In these songs, we witnessed Tala Yunus' brutal side, and my favorite diss track is Joker because of the production and Tala Yunus' brutal flow. These songs got 3 million views on that time, which is big thing for an artist. Let's talk about Tala Yunus' most underrated song. First is Manzar Kashi, second is Aadat, and third is Chal Pade. कौन सा track आपको सबसे ज़्यादा underrated लगता है? Tell me in the comments below. I feel TY is a not promoting type of a guy. From start he has been dropping without announcing mostly. Hardly एक story लगाता है. He thinks अगर गाना अच्छा होगा तो automatically चल जाएगा. That's the reason we don't see him promoting his songs that much. I'm waiting for Tala Yunus album Shikwa Side A. I hope this album will get the recognition of new DHH audience. Tala Anjum and Tala Yunus both are great DHH artists of Desi hip hop. If TY get consistent and do experiments every time, he will get noticed by new audience soon. But I don't want to see him underrated anymore. Both artists are good in their own aspect. Both deserve same respect and popularity. Which artist should I cover next? Tell me in the comments. मिलते हैं next video में. Take care.